morning everyone. I am Mrs. Priyanka Gupta and I welcome you all back. And today we are going to start with chapter 5 of class 8 subject science, and chapter 5 is coal and petroleum. So children, open your book, page number 76, chapter 5, that is coal and petroleum. Now children, first of all we will understand the name of the meaning, that is coal and petroleum. It's a chapter name, coal and petroleum. तो coal means क्या होता है? Coal means होता है कोयला, right? And petroleum is a type of liquid fluid which is used in vehicles. So now children, in chapter 5, coal and petroleum, the first topic we will discuss about our resource. Now resource means क्या होता है? Materials which we are using in our daily life are called resources. There are different type of materials which we are using in our daily life. So different type of materials which we use in our daily life are called resources. Now if we'll talk about resources, there are two types of resources. First one is the natural resource and the second one is the artificial resource. Now if we'll talk about natural resource are the resources which we get from the nature, like sun, light, and mountains, rivers, and there are so many things. See here, example is given like sunlight, rocks, soil, air, water, plants, animal, coal, petroleum, natural gas. So these are the types of natural resources which we use in our daily life, which we see in our daily life. And the second type of resource is the artificial resource, or you can say man-made resource. For example, like chemicals, charcoal, plastic, paper, fiber, synthetic fiber, etc. So these are the types of man-made resource, or you can also say some type of artificial resources. Right. Now further we will discuss the natural resource. Now if we'll discuss the natural resource is divided into two parts. The first one is the inexhaustible resource and the second one is the exhaustible resource. Now inexhaustible resource, if we'll talk about inexhaustible resources are those which remain available forever and cannot be used up completely. What does it means? It means like inexhaustible resource जो होता है वो कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है. It will always be remain forever for use there, and it cannot be completely finished off. That's why it is called the inexhaustible resource. Now the second one is the exhaustible resource. Now if we talk about the exhaustible resource is the type of resource which can be, if it is used, it can be finished off. So this one is the exhaustible resource. एक बार हम लोग इसको अगर पूरी तरीके से यूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिनिश ऑफ हो जाएगा. Now further, exhaustible resource is again divided into two parts. The first one is the renewable and the second one is the non-renewable. Now if we'll talk about the renewable resource, what is renewable resource? Renewable resource, as it clears by its name, see here children, it is written renewable. तो renewable में लिखा है, तो means क्या होता है? We can use it again and again. The thing which we can use again and again, that comes under the renewable resources. And the second one is non-renewable resource. See here, it is written non-renewable means once again it is used, it can be finished off. It cannot be used again and again. That comes under the non-renewable resources. So children, hope this much is clear to you all. Now we will move further on the next topic of the chapter, that is coal. Right? So now children, before starting with coal, first of all we will see about the fossil fuel and exhaustible resource. Now what is fossil fuel? Fuel is a type of energy which is used
Fuel is a type, or you can say source of energy, which is used in different ways. Now if we'll talk about the fossil fuels, what are fossil fuels? The see in book, fossils are the remains of plants and animals which existed upon the earth at one time and got buried under the soil millions of years ago. So if we'll talk about the fossil fuels कैसे फॉर्म हुआ? तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब जो प्लांट्स होते थे या फिर जो एनिमल्स होते थे, दे हैव गॉट बरीड अंडर द सॉइल, और वो उतने टाइम से बरीड, दे आर बरीड अंडर द सॉइल फॉर सेवरल ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स. फिर धीरे धीरे वो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. तो दिस इज द वे थ्रू विच द फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स. फिर बाद में उसी को क्या किया गया, डिग करके जब निकाला गया तो इट फॉर्म्स इन द different forms like coal. Now the next topic is coal. Now in coal the first topic is formation of coal deep inside the earth. अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं formation of coal deep inside the earth, तो see here coal is naturally occurring fossilized plants. जो हम लोग को कोल मिलता है वो जो नेचुरल अकरिंग होता है, जो फॉसिलाइज्ड प्लांट्स होते हैं जो बहुत से मिलियन ईयर्स पहले जो सॉइल में बरीड हो चुके हैं. तो इस अ नेचुरल, अगर हम लोग को जो कोल मिलता है वो नेचुरली मिलता है, इस अ फॉसिलाइज्ड प्लांट फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड प्लांट. नाउ सी हियर द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल मैटर टू कोल अंडर द अर्थ इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. जो वेजिटेबल मैटर्स थे, जो उसका स्लो प्रोसेस होता है कार्बन का कार्बनाइजेशन में फॉर्म होने में कोल का, दैट इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन. एंड द कोल, और जो उससे कोल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स. The deposits of coals are called the coal mines. और फाइनली जो कोल डिपॉजिट होता है उसको क्या कहते हैं, कोल माइंस कहते हैं. सपोज अगर कहीं पे डिग किया जाता है सॉइल को, वहाँ पे कोल मिलता है, तो कोल क्या मिलेगा, लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा, तो उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द कोल माइंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज कोल एज अ फ्यूल एंड इट्स यूजेस. नाउ सी हियर कोल एज अ फ्यूल एंड इट्स यूजेस. Now if we'll talk about coal as a fuel and its uses, coal is a solid fuel. Coal is a type of solid. As we all know कि जो coal होता है वो क्या होता है, ऐसा कोयला होता है, इसको जनरली हम लोग कोयला बोलते हैं. तो it is a type of solid fuel, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, it's a type of solid fuel. Now it is black. अगर हम लोग कोल की बात करते हैं तो it is black and solid fuel, and it is a black mineral fuel of vegetable, plants, origin, body, animal body. So by this process coal is formed in the form of fuels also. Now if we'll further talk about the coal, its uses of the coal, that is, see here, when coal reacts with oxygen it forms the carbon dioxide gas. अगर हम लोग कोल की बात करते हैं तो व्हेन कोल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब कोल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिलीजेस हीट एनर्जी रिलीज होती है. नाउ सी अ कोल बीइंग अ बिग सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. तो कोल को हमेशा क्या सोचा जाता है, इट्स अ बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हाउ? See here the first point is as a fuel to cook food. कोल को यूज़ करते हैं जो फूड अभी भी nowadays also in rural areas, वहाँ पे जो हम लोग के घर में सिलेंडर्स यूज़ होते हैं तो गैस की सप्लाई नहीं होती है, तो इन रूरल एरियाज nowadays also people use coal for cooking their food. वो लोग कोल का यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं so that they can cook their food. Now the second point is for generating electricity. Coal is also used as to generate electricity in thermal powers. Now the third point is as a source of energy in various industries. अगर हम लोग different type के industries की बात करते हैं तो again coal का use होता है different type के industries में it is used for different type of sources of energy. Now the next point is some of its products like benzene, phenol, naphthalene and others are used in various ways in chemical industries. अगर हम लोग कोल की बात करते हैं तो कोल को भी वेरियस वेज में इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है एज अ केमिकल
केमिकल के फॉर्म में इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. Now the last point is at one time coal was largely used to power steam engines. Early times में nowadays जो ट्रेन्स चलती हैं, जो इंजन्स होते हैं, तो उसमें फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पेट्रोलियम, दैट इज़ डीजल और डीजल. बट अर्ली टाइम्स में कोयले का, कोल का यूज़ होता था इन स्टीम इंजन्स और इन इंजन्स. तो अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फर्दर we will discuss about the next topic, that is products of coal. Now see here in products of coal, children, page number 78, when coal is burnt in air it gives a huge amount of smoke. जब भी कोल बर्न होता है एयर के प्रेजेंस में तो क्या होगा, इट रिलीजेस स्मोक एंड दैट स्मोक इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज पॉइजनस ऑल्सो, विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है. देन पोल्यूशन फ्रॉम बीइंग बर्निंग कोल हैज़ बीन द रीज़न फॉर बैन ऑन इट बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स एंड अदर प्लेसेस. बिकॉज जब कोल बर्न होता था तो इससे क्या होता था, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कॉज होता था. इसीलिए कोल को क्या किया गया, इट इज़ बैंड बाय द गवर्नमेंट so that it can't be used in hotels, restaurants, bakeries, homes. Now see here, next one is the coal gas. Now the first point comes, that is the coal gas. Now we'll talk about the coal gas. Coal gas is a mixture of methane, hydrogen, carbon monoxide and a small part of carbon dioxide gas also. And coal gas is used in industries as a fuel. Now the second one is the coal tar. Now children, the next one is the coal tar. If we'll talk about the coal tar is a black liquid material. Coal tar is a black oily liquid type of material when it is heated in the absence of air. जब कोल तार को हीट करते हैं in the absence of air, so it forms it forms a mixture of 200 type of hydrocarbons, or you can say carbon compounds. 200 mixture of other compounds of carbon, like which are used in different type of cosmetics also and different type of products also. अगर हम लोग products की बात करते हैं तो naphthalene balls, like, एंड अगर हम लोग कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स, डाइज, ये सारी चीज़ें कोल तार से फॉर्म होती है. नाउ द थर्ड वन इज द कोक. नाउ चिल्ड्रन, द थर्ड वन इज द कोक. इफ विल टॉक अबाउट द कोक, coke is a solid grey substance. Coke is a type of solid grey substance and formed when coal is heated in the absence of air. And coke is used as a reducing agent in refining the iron ore. Coke is used as a refining agent as it is used in the iron ore and many other matters and in the manufacture of steel. Coke is better fuel since it gives out more heat and less of gases. Hence, it is a non-polluting type of product. Now, the next one is the ammonia gas and carbon dioxide. Now, if we talk about the ammonia gas and carbon dioxide, ammonia gas given out in the process of heating coal is passed through water and treated with sulfuric acid to produce ammonia sulfate, which is used as a fertilizer. Ammonia gas, after treating, it is used as a fertilizer. Now further, it is used as a fertilizer also, and it gives out the urea also. Now these are the products of the coal. Hope you all have understand the topic. These topics are clear to you all. Now we will next discuss about the topic, that is petroleum.